मैंने लिंक नहीं किया कोई दिया। हाय आशीष। Hi Ashish, hi Moksha. Hi, Manish. Thank you so much for doing this. Let's see. Hi Sandeep. Hey, hi Manish. So by the time we Mobile start, networks. okay, no problems. Yeah. So by the time we start, as we wait for more people to join in for another, I think 4 or 5 minutes, can I just have a brief background about yourself, the people who have joined? मैं ही कर देता हूँ. Please go ahead now. Yeah. Yes. So presently I'm in Guwahati and Okay. I'm into the surveillance sector Mm-hmm. that is taking care of focusing on the education sector, Okay. surveillance and their interactive panels and the sound systems basically. Okay. And what brings you here? Is it like connected to what you are doing? No, but I really want to see. I mean, really want to learn. Okay, great. Yeah. Hi, Manish bhai. Hi Abhishek, so nice to see you after a long time. Yeah, it is. All well? Yes, looks like Good. somebody has been turning his hair, a little bald and gray. Always working at it since childhood, since the day I was Uh-huh. born, I guess. Good. So nice to see you, Abhishek. Same here, pleasure. So people are joining. We'll just start in a while. So we'll just wait for another, I think, 3 or 4 minutes. Huh? So it just so happened that, I happened to ask some question and then, I happened to ask some question and the discussion went some other way. And then people started asking about, the Amazon and Flipkart thing. And the group being diverse, I thought it will be good that I'll, try to simplify things by defining the agenda that I have. So that should be able to cover both the basic and the advanced.
Manish sir, you Yes, might sir. want to rename yourself to Manish Verma instead of Sheetal Verma. Oh, yes. I will do that. Manish Verma, 007 लिख दूं साथ में? बिल्कुल चलेगा सर. So, Som, I think you were traveling, but you came in just. वैसे to भी save बॉन्ड me. आप हो ही. सर मैंने मेरी मीटिंग कैंसिल कर दी है. मैंने कहा अरे, कि यहाँ रहना ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा. सर मैं ना सुबह से लगा हुआ हूँ प्रेजेंटेशन बनाने में. मैंने कहा ये एमडीआई की धुरंधर जनता है. I can't make even a smallest of the miss here. I believe there will be a lot of learnings at least. मुझे लगता तो है यार, because we are doing a lot of work there. So for the people who are I am at a good learning curve here. मतलब I can say this with great confidence. Years of experience. तो वो तो होगा. मतलब I think there will be a lot to learn, and I believe जो post meeting presentation के बाद जो question answers होंगे, they'll be better. So we'll just wait for another 2 minutes, and then we'll start. मन भाई, yeah, इंटरनेट डबल स्पीड करवाया है, लेकिन आपका बीच-बीच में कट रहा है. Okay, so I'll do something about it. Just wait, I'm changing my Wi-Fi again. I hope it should be better now. इंशाल्लाह सर. So we'll start in another minute or so. Okay, so am I audible? Yeah, clearly. And Okay, speed great. is good. Yes, sir. All good. Okay, great. So I'll tell you how it all started. That we are roughly doing around 15 to 16,000 units per month on both Amazon and Flipkart. And day before yesterday, some talks were going on, wherein I happened to comment that we are very process oriented, and we are being managed. We are managing this business with just about 3-4 people. So that got people interested, and of course, because of the e-commerce story, because we all know it's poised for about 6 or 7 times growth from here till 2030, from about $50 billion to 350. So that is the kind of number we are looking at. So I thought that will be a great time to talk about this. The agenda, because the group is very, very diverse, I have divided into the sales and the operations part. The basic that I will cover the first, because in that case, then the people who are there just for the basic stuff, they may leave if they want to. The advanced people, who are already started their account, they are doing something, they can stay if they wish to. So that is how I have divided this into the basic sales, basic operations, advanced sales, and advanced operations. So let me just quickly 30 seconds talk about myself. We are DigiDesign Group. We are into digital marketing through DigiDesign. We are into e-commerce, selling over 15,000 units every month. We crossed 20,000 units in month of Diwali last year through DigiCart India. And then of course, we have two branch outs from DigiCart India, which is the eComically. eComically is basically the Amazon and the Flipkart sellers. They can just upload the reports and they will get many things. We are working on it. The results are very good, the pilot testing that we are doing. And True Turtle is would be the name of the affiliate in the e-commerce site that we are coming up with.
So these are the people who are actually in my team, and because there are 3.5 people, that is why for the fourth person I have cut his photograph. So Jatin, my colleague, handles and takes care of the entire data analytics part, and Bhumika takes care of the panel management, and Anurag takes care of the warehouse operations that we do, sitting here. Tarun takes care of the accounts. So we have 4 of our own managed warehouses. And this is very interesting. We used to manage one on our own earlier, and we were based out of, there only. But then we are having now 4 warehouses which are managed remotely. So this has been a great learning for us in the last 1 year, and we have been able to do it. And that gave us the confidence of, starting the e-commerce thing also on our own, that we can manage by just, 4 people sitting on a table. Of course, yes, we are working through Amazon and Flipkart warehouses also. We have premium sellers with Amazon and platinum sellers, platinum tiering with Flipkart. So here are just a snapshot of the business that we did on 19th of March. As you can see that we have about 490 units that were ordered on 19th of March. That was, the Sunday that went by. So I will straight away start with, the first point, identifying a product to sell. Many people come to me and they say, Manish bhai, आप बता दो करना क्या है, क्या करना है, हम कर देंगे, आप जैसा भी बोलते हैं. So I used to tell them that, you need to have some kind of a manufacturing tie-up or this or that. वो कहते नहीं, आप product बताओ. So people, they talk very randomly, and I thought that I will kind of structure what we discuss कि कौन सा product बेचना है into something which is more tangible, and people can relate to that easily. Even a new person can relate to that, but by just doing some kind of hit and trial or some browsing on the websites. So when it comes to data, Amazon I see as a very, very good data hunting ground, even for the back of the envelope calculations. So there was this Japanese supplier who came to me, and he said that, I have few products. So he gave me a list of about 2021. So, but I'm just showing you some 6 of them. So this is, this is the part wherein you can yourself do the analysis, which product to see, or which product will sell, which product will not sell on Amazon or Flipkart. This is how I do it. This is the kind of, the filtration you can apply, the very first filtration, whether you should be selling that product online on Amazon or Flipkart or not. So you could see just the 6 products that he said कि मेरे पास teapot है, एक front and rear camera for car है, portable rechargeable solar LED lantern है, automatic soap dispenser है, rechargeable lantern है, and small portable speaker है. और ऐसे उसने 14 product और बताए थे मुझे. Now the best part was that he gave me a Japanese pamphlet, and he said कि आप इसको Google Translate कर लो. And because he was coming from some kind of a reference or a connection, so we had to oblige him, and we had to do all this work, which usually I say people to do so that they are able to better understand what is happening in the market. So first of all, we see what is the kind of a price range of the product. Then we see how many brands are operating in that. And then we try to see the related keywords. अगर आप जैसे teapot डालेंगे, तो teapot जब आप डालते हैं तो Amazon पे ना खुद auto suggestions आ जाते हैं, जैसे Google में आते हैं. So which is like a teapot or a teapot ceramic, teapot steel, teapot with infuser, teapot glass, like that. ऐसे ही अगर आप rechargeable lantern देखेंगे, जो 5th नंबर का पॉइंट है, उसमें torch lights rechargeable है, emergency lights rechargeable है, and there are so many other kind of the keywords that spring up. Brands 5 to 7 है, जैसे rechargeable lantern में, और price range जो है वो 400 to 700 के बीच का है. Now we introduce one concept which is called the brand analytics report. This brand analytics report जो है, whenever if some seller is registered and also has a brand registered on Amazon, they have access to this brand analytics report. So if you download the last 7 days data or a 30 days data, what this report does is it just shows you as per the frequency कि इसकी सर्च रैंक कितनी है. सो हो सकता है नंबर 1 सर्च प्रोडक्ट या सर्च कीवर्ड है वो लैपटॉप है सपोज, या जीन्स फॉर मेन है. तो ऐसे अगर वो 1 है तो ऐसे करते 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 आई थिंक उसके अंदर 5 लाख या 10 लाख तक वो डेटा जाता है. तो एज यू कुड सी द टीपॉट
it appears at roughly around 9,000 position for the first time. Teapot ceramic comes at 68,000 kind of a position. So we realize that, these kind of keywords, particularly related to teapot, they are appearing very late in the searches. Matlab anything till 3,000, I'll consider it good. Till 5,000, I'll say, okay, we can do this product. But as it keeps on getting a little higher number, like 9,000, 10,000, 68,000, 48,000, 45,000. So these are the kind of things wherein we believe that, this is something that we should not be doing. Then we also take a range of the reviews. So the range of the reviews, when you scroll with using these keywords, is like 4 to 4.5 for a teapot kind of a thing. For rechargeable latte, it is like 3.7 to 4.3. And the average number of reviews, this is very important for us because it gives us the velocity of the product कि ये कितनी तेजी से sell करता है. So as you can see, the bottom two products, जो rechargeable lantern है, जिसके average number of reviews, यानी उस पे जितने products पड़े हुए हैं, किसी पे 50,000 रिव्यू हैं, 25,000 रिव्यू हैं, 5,000 रिव्यू हैं, एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज ऑन दैट रिचार्जेबल लैंटेन इज अराउंड 8 to 10,000. और जो स्मॉल पोर्टेबल स्पीकर है वो 2-3 हजार की रेंज में शुरू हो रहा है, जिसपे नंबर ऑफ रिव्यूज है और 50,000 की रेंज तक जा रहा है. तो विच मीन्स, और अगर आप इसका जो सर्च रैंकिंग है वो भी देखेंगे, इट इज लाइक 60, 200, 550. सो इट इज अ वेरी वेरी हाई सेलिंग आइटम. So any confusion in this, or I can move ahead on this? Okay. So one question I'll put in. Yeah. These rankings of keywords are from the report itself. Yes. Is there any way you can improve the rankings, or if like I want to fill teapots have to sell, I want to sell teapots. Yeah, you can improve. And you can no, you cannot improve the ranking because this ranking is basically the people searching on Amazon. People searching, the number of right. Yeah, you can work on those keywords to improve your product ranking on that keyword, but you cannot work on the keyword as such because that is coming from the Amazon. Okay. Manish, one question from me. So जैसे ये ranking from keywords from brand analytics है, तो इसमें जो एक्चुअल जो वॉल्यूम होता होगा और काफी जल्दी से टेपर ऑफ होगा ना? सी वॉल्यूम नहीं देते वो लोग, वो सिर्फ एक ना फ्रीक्वेंसी रैंक देते हैं, दैट्स इट. बट जी, तो फ्रीक्वेंसी रैंक तो है, जैसे फॉर एग्जांपल आईफोन है, आईफोन की रैंक 1 है, उसका मान के चलो महीने में 1000 यूनिट बिकता है. तो नंबर 2 की और नंबर 3 का जो गैप होगा वो कम होगा, राइट? सो इट विल टेपर ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स व्हिच दे सेल ऑनलाइन इन अ मंथ. No, it is dependent on many factors. I'll tell you. जैसे देखिए small portable speaker है, अगर आप देखेंगे तो so I'll talk about the points that I have written. So the number one point is how many brands are selling. ठीक है, अगर मेरे को point number 5, product number 5 और 6 में अगर मेरे को में से एक पकड़ना होगा ना, तो मैं सबसे पहले लैंटेन पकड़ूंगा क्योंकि वहां पे सिर्फ 5 या 7 ब्रांड्स हैं. पोर्टेबल स्पीकर्स में 15 to 20 है, या हो सकता है उससे भी ज्यादा है, तो वो थोड़ी सी ना कैटेगरी जो है वो क्राउडेड है. तो ब्रांड्स अगर जैसे इतने सारे होंगे, तो इवन इफ यू आर काइंड ऑफ रैंकिंग ऑन द कीवर्ड अ लिटिल हायर, हो सकता है आपका कन्वर्जन रेट उस केस में कम हो जाए. बट इफ यू आर वन अमंग्स द फ्यू सेलर्स एंड यू आर रैंकिंग हायर, आपका कन्वर्जन रेट ज्यादा हो जाएगा. सो पहले तो क्या होगा कि ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट में भी दिखता है कि अगर सपोज कोई रिचार्जेबल लालटेन डाल रहा है तो उसमें नंबर 1 पे कितनी परसेंटेज टाइप, कितने परसेंटेज नंबर 1 पर ये वाला पर्टिकुलरली प्रोडक्ट आ रहा है. मतलब सपोज मैं कोई बेच रहा हूँ, कोई एसएन आ रहा है, तो वो ये दिखा देता है कि 20 से 30% ये अपीयर हुआ, 20% वो वाला अपीयर हुआ सेकेंड प्लेस पे, और 10% थर्ड प्लेस वाला अपीयर हुआ. बट 20% पे जब मैं अपीयर हो रहा था तो हो सकता है मेरी कन्वर्जन रेट जो है 30% है. तो यानी जितने भी व्यूज आ रहे हैं उसमें से 20% लोग मेरे पास आ रहे हैं और 30% खरीद के जा रहे हैं. तो ये नंबर जो है ना, दिस इज एक्चुअल योर सेल्स नंबर. पहले तो आपके इंप्रेशंस दिखे, इंप्रेशंस पे लोगों ने क्लिक किया, उसके बाद लोगों ने बाय किया. तो ये वाटरफॉल अगर आप देखोगे तो ब्रांड्स जब ज्यादा होंगे ना, तो हो सकता है आपकी कन्वर्जन कम होगी. तो you really can't pinpoint exactly what is happening.
So that is why these are mostly the back of the envelope calculations कि जैसे ये brands जो sell कर रहे हैं कितने number of brands है. Second is reviews कितने हैं हमारे average. और ranking और related keywords कितनी है, जैसे मैंने आपको बताया, it is in some cases 60, 200, 600. So these are basically the surrogates wherein you can you can find out कि भाई देखो इस पे तो ये ranking में भी थोड़ा नीचे आ रहा है और number of brands भी जो है ज़्यादा बेच रहे हैं और रिव्यूज भी अगर उसमें कम है तो ये प्रोडक्ट मुझे नहीं करना चाहिए. मतलब मैं लेट मी नॉट इवन गेट इनटू इट इन टर्म्स ऑफ एक्सप्लोरिंग कि मैं कहाँ से लूँ. नंबर ऑफ रिव्यूज इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज आप जो है मोटा मोटा ये देख लीजिए कि आप पहले 3 या 4 पेज पे जब वो स्क्रॉल करते हैं अमेजोन पे, नंबर ऑफ रिव्यूज आप टोटल कर लीजिए, ठीक है. उसको 25 या 40 के नंबर से एक ये रफ है, मतलब देयर इज नो एग्जैक्ट साइंस ऑन इट, आप उसको 25 या 40 के नंबर से मल्टीप्लाई कर लीजिए. So basically, you can roughly say that this has been the number of units that have been sold for that particular product. So अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर total आपके 3 pages में जो products हैं उन पे suppose अगर 1 लाख review हैं, तो you can easily estimate कि भाई ये 25 लाख, 30 लाख या 40 लाख product बिक चुका है ये. और अगर आप उसको उसकी एक एवरेज कॉस्ट प्राइस से या एवरेज सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे, सो दैट इज द काइंड ऑफ सेल्स अवेलेबल ऑन द प्लेटफॉर्म. आप उसको डिस्काउंट कर दीजिए कि भाई ठीक है ये 1 साल में नहीं हुआ होगा नंबर, ये 2 साल में हुआ होगा, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट आज लॉन्च हुए हैं, कुछ प्रोडक्ट 2 साल पहले लॉन्च हुए होंगे, कुछ 3 साल पहले लॉन्च हुए होंगे. तो दिस विल गिव यू अ रफ एस्टिमेट कि भाई दिस इज द काइंड ऑफ सेल्स ऑफ दिस प्रोडक्ट. मतलब दिस विल वेरी फ्रॉम मे बी जो आपके दिमाग में है कि भाई इस पे 100 करोड़ का धंधा है, हो सकता है कोई एग्रेसिव एस्टिमेट लेके बोले 400 करोड़ का धंधा है, बट यू बेसिकली नो कि हंड्रेड्स ऑफ करोड़ में है. ओके, सो these are the surrogates that you can use to find out which product that you have to get into. Then another thing which is important for Amazon and Flipkart also is your brand equity. तो होता क्या है कि जैसे धीरे धीरे आपका जब ब्रांड प्लेस होता चला जाता है मार्केट के अंदर, तो आप ज्यादा प्राइस बैंड्स में नहीं खेल सकते. तो जैसे मैं आपको बताता हूँ, हम लोग गैस स्टोव बेचते हैं, तो गैस स्टोव जो है 1000 रुपए से शुरू होके 4000 रुपए तक भी जाता है, 5000 रुपए तक भी जाता है. आई वॉज सरप्राइज्ड टू फाइंड व्हेन Amazon people showed me this data by masking the other brands, saying that in the range of 2500 to 3500 we had roughly 40% of the market share. And we were nowhere to be seen, rather, just about 1.5-2% in 1500 to 2500. So that clarity should be very much there कि अगर आपकी जो टारगेट ऑडियंस है और आप जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं उसके अंदर रफली कौन कौन से वो बनते हैं साइलोज या प्राइस बकेट्स, और आप 1 या 2 से ज्यादा प्राइस बकेट में नहीं खेल सकते, बिकॉज आपकी ब्रांड इक्विटी वैसे डेवलप हो जाती है कि भाई मैं इस टाइप का प्रोडक्ट बेचता हूँ, मार्केट मेरे को इस टाइप का ब्रांड मांगती है और वो मेरे को इस टाइप का पैसा देगा. मतलब ये नहीं कि आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं अपने ब्रांड में जो बहुत ही हल्का है और एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं दूसरे ब्रांड में जो उसी ब्रांड में बट इन द हायर काइंड ऑफ बकेट, बिकॉज Amazon और Flipkart के जो एल्गोरिथम्स होते हैं दे काइंड ऑफ स्टार्ट शोइंग योर ब्रांड to those people who are kind of buying or have that kind of a buying capacity. तो अगर वो confusion हो जाती है ना, तो अगर वो wrong target audience को दिखने लगेगा तो आपका conversion गिर जाता है. And then of course when you have a roughly कि भाई आपके पास एक एस्टिमेट आ गया कि भाई मैं जो हूँ यहाँ पे जो है मार्केट जो है 50 करोड़ का सामान बेचती है साल का, सपोज यू हैव गॉट द एस्टिमेट, तो आप उसमें से ले लीजिए कि भाई आप टारगेट कीजिए कि भाई 1% से लेकर 3% की क्या आप 6 महीने में वहां तक पहुंच सकते हैं. कि अगर 50 करोड़ एक रफली अगर मार्केट बेच रही है अमेजोन पे, सपोज एक एग्जांपल है, तो क्या मैं 50 लाख का माल बेचना शुरू कर सकता हूँ, यानी इसका मतलब है क्या मैं 4 लाख रुपए महीने की सेल पे पहुंच सकता हूँ इस प्रोडक्ट के लिए. सो दिस इज हाउ यू हैव टू डिफाइन दिस. ओके, शैल आई मूव अहेड ऑन दिस? मनीष भाई एक सवाल था छोटा सा, या इस पे सीजनैलिटी भी कहीं प्ले करती है क्या? क्योंकि ऑल दीज प्रोडक्ट्स आर क्वाइट रेगुलर across all the seasons, but there might be some products which are seasonal in nature as well. So तो सर जैसे हम एग बॉयलर्स बेचते हैं, तो एग बॉयलर्स के अंदर जनरली जो है ना गर्मियों में वो थोड़ा स्लो हो जाता है. जैसे हम लोग जो है पंखे बेचना शुरू किया अभी, तो एवरीबडी नोज कि भाई जून या जुलाई तक वो पंखे सबसे ज्यादा बिकते हैं. तो दैट फैक्टर इज देयर एंड दैट इज व्हाई आई एम सेइंग टू सी इन टोटलिटी कि जब आप पूरा देखेंगे ना तो वो सारे नंबर जो है एवरेज हो गए.
क्योंकि आप उसके अंदर इतनी assumptions ले रहे हो, ये दिस इज अ वेरी वेरी बर्ड्स आई व्यू, आप सिर्फ assumptions ले रहे हो कि भाई ये प्रोडक्ट में मैं घुस भी सकता हूँ या नहीं, क्योंकि इसके बाद जब आप थोड़ा सा और डीप डाइव करोगे ना, देन यू आर गोइंग टू आस्क मोर क्वेश्चंस, जो मेरी अगली स्लाइड्स में है। ओके, कैन आई मूव अहेड? अच्छा मनीष, just to be clear, या आप प्राइवेट लेबल करके ही बेच रहे हो ना? private label as in I do not own the brand, but I take from the manufacturers and sell them, but तो I'm आप trading. मैन्युफैक्चरर की ब्रांड में ही बेच रहे हो? मैं मैन्युफैक्चरर के ब्रांड में ही बेच रहा हूँ, बट हम धीरे धीरे अपने Okay. ब्रांड में भी आएंगे। गॉट। या ये जो आपने सेल बताया मनीष भाई, ये मंथली सेल है एज्यूम? नो सर, ये मंथली सेल मत एज्यूम करो आप इसको। ये वाली जो है ना सेल, ईयरली सेल एज्यूम करो। बेसिकली क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। सपोज मान लीजिए एक लाख रिव्यूज हैं किसी प्रोडक्ट के, ठीक है। आपने 3 पेजेस पे सर्च किया, जो प्रोडक्ट्स दिखे उस पे आपने टोटल किया, सपोज 1 लाख प्रोडक्ट्स आ गए उस पे, ठीक है। 1 लाख रिव्यूज आ गए सपोज उस पे, तो आपने कहा कि मैं इसको 25 से एक बार मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये 25 लाख प्रोडक्ट बिके होंगे, ठीक है। अगर 25 लाख प्रोडक्ट बिके होंगे और सपोज जो वो है, अगर मान लीजिए वो 500 रुपए का प्रोडक्ट है सपोज, तो रफली अराउंड 125 करोड़ रुपए की सेल हो गई, ठीक है। अब ये 125 करोड़ रुपए की जो सेल है, डोंट एज्यूम दैट इट हैज हैपेंड इन द लास्ट 1 ईयर ओनली। एज्यूम दैट आप उस पर एक नंबर ले लीजिए कि भाई ये चीज तो बहुत टाइम से बिक रही है इस मार्केट में, बट क्योंकि सेलर्स और प्रोडक्ट्स नए या पुराने हो सकते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि भाई ये 2 साल में बिका होगा। तो 125 करोड़ से अगर आप उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास 60 करोड़ के करीब का नंबर आ जाता है, जो एक ईयरली नंबर बन जाता है। अब वो 60 करोड़ का अगर नंबर आपके पास आ गया, तो आपको ये देखना है कि भाई अगर मैं इसका 1% भी टारगेट करता हूँ, तो क्या मैं 60 लाख रुपए का बिजनेस कर सकता हूँ 6 महीने के बाद? 60 लाख रुपए एनुअल टाइप का, तो 60 लाख रुपए एनुअल टाइप का मतलब हो गया कि आप 5 लाख रुपए सेल्स की बात कर रहे हैं। ब्रिलियंट, थैंक यू। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी सरोगेट एंड अजम्पशन, बट हम लोग वहीं से ही आ रहे हैं, बिकॉज आप लोगों के पास क्वेश्चन यही होता है कि यार कौन सा प्रोडक्ट देखें, तो दिस इज हाउ यू सी द प्रोडक्ट। मतलब you are going into the finer details later on, but as of now, with these kind of very little information available to you, you can do that. Okay, so I'm moving ahead now. So this is basically working out the cost of sales, और ये जो है ना, ये काफी हद तक मेरे कुछ प्रोडक्ट्स हैं उन पे ये एक्चुअल्स पे जो है वर्किंग आउट करा हुआ है इसके अंदर। तो मैं आपको एग्जांपल लेता हूँ। जैसे हमने जब से सपोज डिफाइन कर लिया कि मेरे को एक लैंटेन बेचनी है या मेरे को पोर्टेबल स्पीकर बेचना है, ठीक है। फिर मैंने मैन्युफैक्चरर के साथ स्पेसिफिकेशंस पे बात करी कि भाई आपकी स्पेसिफिकेशंस क्या क्या है, मार्केट में ये चल रहा है, सबसे बढ़िया प्रोडक्ट ये चलता है। अगर सपोज मैं गैस स्टोव की बात करूं, तो ये 3 बर्नर है, इसका साइज ये है, इसमें ग्लास की थिकनेस ये है, इसमें नॉब्स का स्टाइल ऐसा है, ये ऑटोमेटिक है या मैनुअल है, एलपीजी है या पीएनजी है, वो सारी चीजें हमने उनके साथ डिस्कस कर ली। सो वंस वी डिस्कस दैट, व्हाट हैपेंस इज दैट द पर्सन सेज ओके, मैं ना आपको ये इतनी कॉस्टिंग पे दे सकता हूँ। जैसे ये मैंने प्रोक्योरमेंट कॉस्ट लिखी हुई है, विच इज विदाउट टैक्स, तो ये बीच में कहीं पे आ रही है। आई विल शेयर दिस एक्सेल आल्सो लेटर ऑन। These kind of calculators आपको मिल जाते हैं, बट आई एम जस्ट शोइंग हियर टू कीप इट इन पर्सपेक्टिव कि आप लोग इसको कैसे समझेंगे। सपोज कोई प्रोडक्ट है जिसमें 6.5% कमीशन लगती है। फ्लिपकार्ट अगर सपोज 7% लेता है, 7.5 लेता है, आप उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। इट इज लाइक द एक्सेल रिमेन्स द सेम, द पॉइंट रिमेन्स द सेम। सपोज आपने उसकी लिस्टिंग करी कि भाई एक प्रोडक्ट है, अगर इस स्पेसिफिकेशन का होता है तो वो 999 का बेचूंगा मैं, ये 1099 का बेचूंगा या 1199 का बेचूंगा। तो ये हिट एंड ट्रायल रहेगा, आप इसको बढ़ा के भी घटा के भी सब कुछ करेंगे। ओके, सेल्स विदाउट टैक्स, क्योंकि यहाँ से हम अपना रियलाइजेशन कैलकुलेट करेंगे, तो मैंने वो दे दिया कि जैसे ये जो हम 999 का बेच रहे हैं वो लगभग 850 का बैठ रहा है, 1100 का जो बेच रहे हैं 931 का बैठ रहा है, एंड लाइकवाइज कमीशन आपकी लगती है सेल प्राइस पे, जो लिस्टिंग प्राइस है उस पे कमीशन हमने 6.5% ले ली, फिक्स्ड फी ले ली, और हमने वेट हैंडलिंग ले लिया, ठीक है। तो जो पोर्टल के जो एक्सपेंसेस हैं वो BCD हो गए, तो दीज हैव बिकम द पोर्टल के एक्सपेंसेस। अगर मैं प्रोडक्ट ए की बात करूं,
तो अगर हम सेल्स कर रहे हैं विदाउट टैक्स 850 रुपए की, उसमें से 168 रुपीज हैव बिकम दी पोर्टल के एक्सपेंसेस। ओके, बट देर आर फ्यू एक्सपेंसेस जो मेरे एंड पे भी होते हैं। तो जैसे प्रोसेसिंग है मेरे एंड पे, अगर मैं उसको पैक करके भेज रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, या मैं अगर अपने गोदाम में उसको रख रहा हूँ, उसका स्टोरेज कॉस्ट है, या मैं अगर FBA में भेज रहा हूँ या FBF में भेज रहा हूँ, वहाँ का स्टोरेज कॉस्ट है। तो मैंने एक रफ कैलकुलेट किया। ट्रांसपोर्ट मैंने कैलकुलेट किया। हाँ, आई कम टू दैट, दी एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पे मैं आता हूँ आपके पास अभी। ट्रांसपोर्ट मैंने कैलकुलेट किया और मैंने टेक कैलकुलेट किया कि भाई मेरे पास ये है, और अदर्स में जैसे श्रिंकेज है या लॉस ऑफ इन्वेंट्री है या कुछ और चीजें हो जाती हैं, वो सारा मैंने कैलकुलेट करके बोला कि जो मेरे अदर कॉस्ट हैं वो लगभग 42 रुपए के हैं, लगभग। तो मेरे टोटल एक्सपेंसेस 168 प्लस 42 लगभग 210 हो गए इस केस के अंदर। अगर मैं देखूं सिर्फ मार्केट प्लेस फी के हिसाब से, जो मेरी ग्रॉस रियलाइजेशन है वो 89 रुपीज की बैठती है, विच इज 9% ऑन माई लिस्टिंग प्राइस। ओके, अगर मैं नेट रियलाइजेशन की बात करूं कि मैं अपने अदर कॉस्ट जो ये 42 रुपए के हैं, 42 रुपीज के, वो भी हटा लूं, तो मेरी जो नेट रियलाइजेशन है वो बैठती है अराउंड 47 रुपीज, विच इज लाइक 4.7%। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं कि भाई ये जो नेट प्रॉफिट है एट 1000 यूनिट्स पर मंथ मेरे को कितना बचा के जाएगा, तो वो लगभग 47,000 रुपीज मेरे को बचा के जाएगा, 47,000 रुपीज पर मंथ, if I am able to sell 1000 units. Okay, now this is the kind of number that you have to see ki whether you can achieve this kind of a sale, 1000 unit sales in 6 months time and can sustain it or not. तो अगर ये 47,000 रुपीज अगर आप 6 महीने में कर रहे हैं एंड यू से दैट ओके मैं 12 महीने तक मैं 2000 यूनिट्स इसको ले जा सकता हूँ, तो रफली जो आपकी नेट रियलाइजेशन है वो 5 लाख रुपए की बन जाती है। ठीक है, अगर वो 5 लाख रुपए की आपकी रियलाइजेशन बन जाती है तो आप ये सोच सकते हो ना फिर कि भाई ये 5 लाख रुपए मैं एडवर्टाइजिंग में डालूं या मैं ये इन्फ्लुएंसर्स में डालूं, सो दैट दे टॉक अबाउट द प्रोडक्ट, एडवर्टाइजिंग में डालूं, गूगल एड्स में डालूं, सोशल मीडिया एड्स में डालूं, तो देन यू काइंड ऑफ गेट अ बजट टेंटेटिवली दैट यू कैन वर्क अपॉन। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? And this, by the way, this number is low. The percentage of sales that is coming, 8.9 or 7.2 or 8.1, you should not be starting with such low numbers. मनीष, आपके ये A-E 88 कैसे आ रहा है? 678 नहीं होगा? कहाँ पे? You said gross realization post MP fees, marketplace fees, A-E. कॉस्ट भी माइनस कीजिए ना, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी माइनस कीजिए। हाँ, प्रोक्योरमेंट कॉस्ट भी माइनस करिए। आई एम सो सॉरी, आई फॉरगॉट टू मेंशन दैट। LB माइनस किया इसमें, आई एम सो सॉरी। So Manish, you're pretty much saying that for a product that you're selling at $1,000, about $200 is what the platform is taking away from you. No, right? no, the platform plus my local expenses. मतलब your dispatch costs and all that covered. Yeah, right? Yeah. So about $200 is what it's taking away from you, which is pretty much what, I mean, that's been my experience also. But it's just that, is this the case? I mean, is there a way, is there any opportunity to reduce this margin as we scale in terms of volumes? Or is this going to stay the same? No, it can reduce. Okay. And so where are you seeing in terms of the opportunities? So I will have to take this offline with you, Bindu. Okay. I'm so sorry, I can't discuss it in open. Yeah. No issues. Okay. Okay. And so, the other thing is, your procurement cost is the price at which you are buying it from your manufacturer, right? Yes. That's what you mean by procurement cost. Yeah. So you're buying it at $590 and you're selling it at $999. Yeah. And you're spending 200 and you're giving away $209 is what is going to your the whole cost of expense, and you also have to cover your advertising within this space. Yes, right? Yes. Yeah. This is like, okay, fine. Now want to hear your advertising story. Yeah, so I'll take the advertising story then first, because I think it's very, very related and people have been asking about it. By the way, for this, this maths that I've shown you, I said it is close to what we are doing, but we are actually, because of other things, we are making a little more money than this, and we are selling roughly around 125 to 130 per day for this particular item.
So I will come to the advertising then, because I think yeah. Manish, if I may ask one question before that. Yeah. Sorry. Yeah. Is it a general practice to have a multiplier of, I mean, it's not even 2 right now in this your case. No, that totally depends on the category, because if you'll see, the commission here is 6.5%, but in certain items it goes up to as high as 15% also. And also what happens is that the value of the product sometimes it is going in half kg. Two of my products in this were going at 2 kgs. So the value wise, these products are not as high in value as many other products are. So this ratio can be a little here and there also. So can I assume that these numbers that you have presented are basically more what you call, they're basically safe numbers? These are safe numbers, you can assume, but अगर किसी category में commission बहुत ज़्यादा इधर-उधर हो जाती है ना, तो these numbers can change that. Okay, got it. Thanks. So these are more representative of a kitchen appliances kind of a category. Right. पर किचन अप्लायंसेस में ना आपको एक चीज भी मैं बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए मैं 1000 रुपए की एक चीज बेच रहा हूँ, बहुत देसी हिसाब में आपको बता रहा हूँ, अगर मैं 1000 रुपए की चीज बेच रहा हूँ और सपोज वो जो है 2 किलो की शिपमेंट में जा रही है, ठीक है, तो आई एम एक्चुअली सेलिंग ओनली 500 रुपीज पर किलो काइंड ऑफ एन आइटम, राइट. बट अगर कोई क्रीम बेच रहा है अपनी, या बहुत अच्छा कोई सामान बेच रहा है, दे कुड बी सेलिंग दैट विच इज लाइक 1500 रुपीज पे आधा किलो का बिक रहा है वो, तो दैट इज लाइक 3000 रुपीज पर केजी काइंड ऑफ अ मटेरियल दैट दे आर स्पेंडिंग, दे आर सेलिंग, राइट. तो फ्रॉम 500 रुपीज पर केजी टू 3000 रुपीज पर केजी, तो ऑफकोर्स जो 3000 रुपीज पर केजी का जो माल बिक रहा है ना, उसके अंदर ज्यादा चांसेस हैं कि वो कॉस्ट बहुत अच्छे से एट्रीब्यूट हो जाए. तो यू जस्ट हैव टू फाइंड द स्वीट स्पॉट, बिकॉज अगर ये चीज हमें पता है तो ये अमेजोन को भी पता है, फ्लिपकार्ट को भी पता है, तो वो कमीशंस वगैरह ना उस हिसाब से बढ़ा देते हैं, सो दैट दे जस्ट गिव यू इनफ एज अ ब्रीदिंग मार्जिन कि आपको लगे हाँ काम हो रहा है और प्रॉफिट आ रहा है. Thanks. Okay. So now because we immediately came onto the campaigns, तो ये मैं campaigns का आपको बता देता हूँ. So these are like these are the real figures from my dashboard of Amazon. I don't trust at all the Flipkart ka advertising ka dashboard. They just are like nowhere compared to what Amazon is when it comes to the reporting of the dashboard, the advertising campaigns. So if you can see, we have been like advertiser there for about 4+ years now. The lifetime that we have spent is roughly around 75 lakhs. उसमें से हमारी जो बेस्ट कैंपेन है वो 32 लाख रुपया स्पेंड कर चुका है, और 32 लाख पे हम 5.25 करोड़ ऑफ सेल्स उस पे ला चुके हैं. eCommerce is 6.1. eCommerce is basically your the spend over sales, that kind of a number, and ROAS is the ulta number. So 1 by eCommerce is ROAS, which means that every 1 rupee spent, how much sales you are getting? We are getting 16 rupees. Okay. Now here is the catch. The thing is that though we are spending 6% as eCommerce, but in this particular campaign, the gas stoves that we are selling, the organic sales is roughly around 2/3 of the total sales that we are doing. So if I just divide this number by that discounted by 70%, तो मेरा जो actual cost of sales है on gross sales, this number comes down to less than 1.8%. 1.8, 1.9% आ जाता है मेरा ये number. ठीक है? Look at this number, egg boilers. Look at the CTR. The click-through rate is less in this. मनीष, उल्टा नहीं होगा. अगर आपका ऑर्गेनिक सेल ज्यादा है तो फिर तो एक कॉस्ट बढ़ जाएगा ना आपका. नहीं, ये सिर्फ इनऑर्गेनिक का नंबर है ना ये. This number is purely inorganic. This is only your campaign sales, or is this overall sales? This is campaign sales. Okay. So this is campaign. Okay. So your ROAS on campaign sales is 16. Yeah. Wow, man. मेरा account भी handle कर लो. Okay, no, but I'll come down. Like, this egg boilers, we have been doing this for about 1.5 years. We have spent close to around 5 lakhs. Look at the ACOS and look at the ROAS. So it may look very, very close to the ACOS of, the best performing campaign, but इसके अंदर हमारा जो है ना 50-50 है.
50% ऑर्गेनिक है एंड 50% इनऑर्गेनिक है. मतलब हमारी कैंपेन्स अभी भी इसके अंदर ऑप्टिमाइज हो रही है. ओके. And look at this fans that we launched just last month. The fans has been a story which is a little, kind of a slow for us, but we'll pick up pace. We are very, very sure on this. Look at the CTR that we have, 0.2%. We have spent, ये हमने last month launch किया था. अभी एक महीना भी पूरा नहीं हुआ है. We have spent close to 1.5 lakh rupees on this. Look at the kind of CPC that we are doing. Look at the kind of ACOS that we are doing. And, the most of the sales are inorganic only here. Okay, so this number first we'll try for 25%. When we started, it was as high as 75. Then we brought down under 50. Now we plan to bring it down to 25, then 20, then 15, then 10, and possibly within a year it should come down to below 10%. Whereas while the organic share in the total sales will start going up. So one of the questions that I got asked was कि आप इसमें advertising कहाँ से लेते हैं? तो advertising is basically not a spend. You please treat it as an investment. Because अगर मैं इसको as a spend ले लूँ तो मैं कभी ये spend ही नहीं करूँगा. If I take it as an investment, क्योंकि मुझे पता है कि ये वाली campaign इस टाइप की campaign बन जाएगी, किसी दिन ये वाली campaign इस वाली टाइप की campaign बन जाएगी, तो I keep on investing money because I have seen these numbers. At 2/3 of organic sales, I have seen this number at 1/2 of the organic sale, and this number is yet to build up. Any questions on this? Okay, Manish, I have one question. When you said this top thing, which your 4-year plus is basically your the cooking stove stoves. or something. That's what's the bulk of your 4-year wala you think? Gas stoves. What's the thing that you're selling? Gas stoves. Gas stoves, right? Yeah. So when you say 2/3 of it is organic sale, I mean, see, for me, it's easy to understand what's organic sale because there's a lot of repeat purchases associated with my product because it's a healthcare product. But I'm just thinking from a gas stove, we don't keep changing it every year, right? So your organic sale contribution kahan se aa raha hai? Because your organic sales is driving 2/3 of your business. So that's like a great place to be. So I want to understand how you drove that. We have basically now over 23,000 reviews on all the product ranges that we have. तो हमारा कन्वर्जन बेटर होता है. तो उनके एल्गोरिथम में ये भी होता है कि कितने पेज विजिट्स हुई और कितना कन्वर्जन हुआ आपका. तो हमारा जो ऑर्गेनिक रैंकिंग है ना, दैट इज फ्रॉम नंबर 3 to नंबर 19 और 20 ऑफ ऑल द प्रोडक्ट रेंज दैट वी हैव. तो वो जो सेल्स रैंक है, बिकॉज ऑफ द स्पीड, बिकॉज ऑफ द रिव्यूज विच आर कमिंग इन, बिकॉज ऑफ द कन्वर्जन्स विच आर हैपनिंग, so we are able to sustain there. Okay, any other question on this? Manish, I have a question. Yeah. Do you see any pattern when you say you talked about this product which you launched recently? Yeah. Have you seen any pattern key in how much time does it get to a higher ROAS of say crosses 15 or upwards, or is it like dependent upon the category of the product or pricing? Is there some? Yeah. I'll tell you. So when we launched egg boilers, within 1 month we were able to get into the first page of organic ranking. Okay, the brands were less, and also what had happened was that the brands were less. That was one of the points, and that was the main point basically. And here in fans, though we have achieved sub 100 ranks, as in when we launched it was like 1100 rank or 1200 rank. So we have come to below 100. We are in the range of about 70 or 80 as a sales rank, but we are yet to break into the first 2 or 3 organic pages. So I believe that when somebody goes and sees and says that there are only 20 ratings or 25 ratings that are there on that, compared to Havells or a Crompton or a Bajaj or a Usha, who have 20,000 plus or 15,000 plus or 10,000 plus. So definitely our conversion, gets a hit because there are many more brands which very, very heavy rankings and ratings, but we are going to build it. So all this build up will take time, a little more time in fans, but we are targeting a number of 100 per day in about 3 or 4 months from now. Okay, can I move ahead?
Manish, one more question here. Yeah. Since because this slide is about campaign optimization. See the ROAS and the ACoS numbers, and of course the spend and sales we're all tracking. What I want to understand is the other parameters that you've highlighted, right? The CTR and the CPC and all that stuff. Yeah. Tell me, do you have some, I mean, what are the benchmarks that I need to be looking at, or which are the points at which I need to get wary about to be able to evaluate whether a certain campaign is it, should I pull it back? Can it be optimized further? Those numbers, can you give me some? Yeah, so I'll tell you, Bindu, that, for my team, so that they become a very, very, kind of very idiot-proof approach, I have created a document for them wherein I just say कि अगर CTR आपको इतना दिख रहा है, CPC ज़्यादा दिख रहा है, और ये ऐसा दिख रहा है, तो आप इसको ये कर दीजिए, और यहाँ पे आप इसको कीवर्ड को बंद कर दीजिए, पॉज कर दीजिए. अगर ये आपको 2-3 नंबर ऐसे दिख रहे हैं तो इसको ऐसे कर दीजिए. I can share that document with you. But super, it won't yeah. be, please do that. Please do that. I mean, if everyone wants it, fine. Otherwise, I can send you my email ID. Please share it. No, I'll send it. Campaign optimization document I'll give to you. Okay. Okay. So shall I move ahead? Okay. Yes, please. So we were talking about, we talked about the working out the cost of sales, and then from there on we moved on to the campaigns. क्योंकि किसी ने बोला campaigns इसमें कैसे लिया, तो campaign जो है आप expense का part मत लीजिए, investment का part लीजिए. ये मान के कि अगर मैं 1000 यूनिट कर लूंगा और 2000 तक मैं 12 महीने में पहुंच जाऊंगा, तो मेरे को अगर इतना पैसा बच रहा है and how much I want to invest in marketing, तो वो marketing के हिसाब से वो बजट आप तय करके you go with that purse. But मैंने कईयों लोगों को देखा है कि मतलब I just happened through MDA only, somebody spoke to me that lady was into I think some I think dog food, she was there, and she had spent close to about 1.5 lakh rupees generating a sale of not even I think 25 or 50,000. So आपने optimize नहीं किया, but आप पैसे डालते चले गए, तो वो भी गलत है. तो then I gave her some pointers on how to optimize. So उसके बाद मेरी बात नहीं हुई, but hopefully she would have benefited. So let's move on. I have talked about the basic of sales, which is like identifying a product to sell and working out the cost of sales. This can be good for the new people and also for the older sellers who wish to do it or launch a new product. Now I'll talk about the basic operations, cataloging. One thing is for sure, cataloging, मैंने जितने भी sellers से बात करी है या उनका मैंने screen देखा है, they are doing a great job on cataloging. Specifically the new sellers, when they come out with a brand, Bindu, I have seen yours, that dog food page that I saw, beautiful cataloging that they have done. So it is not something that I'll dwell more upon. I'll just say that like we launched this fan. So these were the kind of images we made in the product listing images. So one is the product listing thing. This we made for the I think the brand store page, and this we made for the A+ content. So of course, because it is not being shown in a particular way, जैसे वो दिखना चाहिए, तो इसलिए थोड़ा वैसे अजीब सा लग रहा है. But once you are able to make the listing images, you are able to make the brand store images, and you are able to make the A+ content images, trust me, you can use those images at various number of places. Flipkart पे भी use हो जाएंगे, आपकी website पे भी use हो जाएंगे, काफी जगह पे वो चीजें use हो सकती हैं. कैटलॉगिंग में एक चीज और होता है, ब्रांड एनालिटिक्स से जो आपके कीवर्ड्स निकलेंगे उनको अपनी लिस्टिंग में जरूर पॉपुलेट कीजिएगा, टाइटल के अंदर, बुलेट पॉइंट्स के अंदर, डिस्क्रिप्शन के अंदर, और एक जो इंटरनल जो आपका पैनल के ऊपर जो लिस्टिंग का पेज होता है वहां पे भी कीवर्ड्स डालने की एक जगह होती है, वहां पे भी जरूर डालिएगा. एंड जस्ट टेक इट फ्रॉम द ब्रांड एनालिटिक्स रिपोर्ट, दैट इज द सेफेस्ट थिंग टू डू. इफ यू प्ले दिस राइट, तो कई बार अगर हम सर्च करते हैं तो आता है ना Amazon's चॉइस, वो आ जाता है. तो जैसे हमारे को गैस स्टोव्स पे अभी कुछ दिन पहले, गैस स्टोव इज अ वेरी टफ दैट वेज, Amazon चॉइस उसमें मिल गया था. आई थिंक वो टॉप 3 जो प्रोडक्ट्स उस कीवर्ड पे आते हैं, टॉप 3 प्रोडक्ट्स को Amazon चॉइस का वो टैग मिलता है. तो we had bought it, which was a very tough category, and we regularly have it for I think gas stove 3 burners or 3 burner gas stoves. We have it very regularly. If you are able to break into a high ranking keyword, a low ranking, मतलब जो अच्छा कीवर्ड है, और उसके अगर आप टॉप 3 में पहुंच जाते हैं ना,
तो देन एक तो Amazon चॉइस मिलता है आपको, आपका कन्वर्जन और क्लिक्स बढ़ जाता है. So that is what helps you in the organic business also. So I'll not सर spend, अमेजोन yeah, चॉइस वाला लेबल बाय कीवर्ड मिलता है या बाय कैटेगरी मिलता है? बाय कीवर्ड मिलता है. ओके. हाँ, तो कई बार आपने देखा होगा कि अगर आप उस पर अपना ब्रांड नेम डाल के लिखेंगे ना, तो आपका अगर प्रोडक्ट जब दिखाएगा उस पर Amazon चॉइस लिखा होगा, तो हम लोग खुश हो जाते हैं Amazon चॉइस लिखा है, बट वो Amazon चॉइस इसलिए लिखा है क्योंकि उस कीवर्ड पे हमारा प्रोडक्ट टॉप 3 में रैंक करता है. क्लियर, थैंक यू. Okay, so I'll not spend more time on cataloging. I'll just straight away move to the next agenda, which is the advanced sales. Once we have already decided हमारे को कौन सा product launch करना है, मोटा pricing हमारा decide हो गया है, तो what all things that we need to do. Okay, so pre-introduction check में researching the competition is very important, और researching the reviews, Q&A and the customer pain points. तो हम लोग जब भी कुछ लॉन्च करते हैं तो हम Q&A उसका बहुत सारा लिख देते हैं, बना देते हैं, कंपटीशन को बहुत अच्छे से रिसर्च करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि जो भी कस्टमर के हमारे को पेन पॉइंट्स उसके अंदर दिख रहे हैं वो हमारी लिस्टिंग में कहीं ना कहीं पर आ जाए, चाहे वो केटल की तार की लंबाई हो या एक पंखे की स्पीड कहीं तक ना पहुंच रही हो, वो टाइप की चीज हो. तो दैट रियली टेल्स यू कि कस्टमर कहाँ पे आपको पेन दे सकता है, आपका रिव्यू खराब कर सकता है, ऑल दोज थिंग्स. So that is why in that pre-introduction check, we do a lot of research on the competition और हम उसमें reviews ये सब करते हैं. एक चीज जो हम और करते हैं, I don't know whether you have been able to, anybody who's already a seller has been able to put his or her brains on this. कई बार हमारे को variations दिखती हैं किसी प्रोडक्ट में. What happens is during the time of the launch, variations में मेरे को कितना ऑर्डर करना है. जैसे सपोज मैंने अभी कोई चीज उठाई, तो मैं अगर उसको मैन्युफैक्चरर या वेंडर से ले रहा हूँ, तो शुड आई बी टेकिंग, इफ आई एम टेकिंग 5 वेरिएशन, शुड आई बी टेकिंग 20 20 20 20 20, और शुड आई बी टेकिंग 50 40 30 लाइक दैट, लाइक हाउ आई शुड बी 40 30 20 10 ऐसे लूँ मैं या कैसे लूँ, वो हमारे को समझ नहीं आता. So there is a way, from the competition reviews and the ratings that you can assess that एक particular product का contribution total product sale में, एक variation का contribution total product sales में कितना है. Does anybody know of that? Am I audible? Am I audible? You're audible. Okay. Yes, you're audible and nobody knows, it seems. Okay. So, I'll give it on one-to-one. I'm not going to give it here. So, I can tell you how to, when you're researching the competition, आप ये पता लगा सकते हैं कि उसकी कौन सी वेरिएशन सबसे ज्यादा बिक रही है. तो आपको बहुत सारे कॉल आएंगे, यही बता दीजिए. I'll take them, sir. I'll take each and every call Sorry? from India. मनीषा बीच-बीच में ब्रेक जरूर हो रहे हैं. Okay. Can't really help, sir. Just a moment. I'm changing my Wi-Fi. Just 1 minute, please. 500 हमारा है. Okay, I'm back. Am I audible? Can somebody help me tell if I'm audible? Am I audible? UP5 करा रहा है. I am back. Am I audible? Am I audible? Can somebody tell me? अभी आप ऑडिबल हुए हो. ठीक है, काफी देर से आप फ्रोजन थे. Right. Thank you. Yes, we can hear you now. Okay. Yeah. So pre-introduction check, we do a lot of research on the competition, and then the Q&A, and we do keep them ready. Now moving on to the next point, the launch readiness. So we have already talked about the wow photo shoots. We have already talked about the creative and the practical listing of the product. Budgeting and planning हमने पहले discuss कर लिया. We have already discussed that, the budgeting and the planning part for marketing spends. And there is one more point, service availability. So now अगर हम अपना कोई category launch करते हैं, तो हम बिना service readiness के नहीं launch करते.
So we have already, a IVR or an email already and a person in place to take all those kind of calls with the script ready as to what to say, when this kind of a situation is arising. We are also using some WhatsApp chatbots, जो बहुत generic सी queries वगैरह हैं उसको reply करने के लिए, so that the burden is little less. So we are doing that. So you please focus on the service thing from day one. So when we launch a particular product, so of course we have the attractive pricing. We build on the pricing in a month or two, depending on how the product offtake is. We do a lot of samplings through friends, family, and influencers. And this rather actually, takes place just before we actually very fully launch the product. So this starts to happen a little earlier than that. We have attractive pricing, as I told you, and we not only plan these spends through marketplaces, which is like the Amazon or the Flipkart. We do a lot of Google ads also and social media ads also, because we want Amazon or Flipkart to believe that there is a lot of interest coming on the page. And we do a lot of, a landing from other mediums also onto that particularly Amazon product page. So this is how we give visibility. Visibility देना बहुत जरूरी है किसी भी launch में. तो I just talk about two things, which is the visibility and the velocity. So visibility देने के लिए ये सारी चीजें हैं, that the listing is very attractive, the pricing is good, and you are planning your spends. Yeah. मनीष, मोटा मोटा कितना बजट रखते हो प्रोडक्ट लॉन्च के लिए? सर मैंने जैसे पंखों के लिए 10 लाख के करीब रखा हुआ है 3 महीने का. So 3-4 लाख रुपए महीने के हिसाब से. जी. Oh, got it. Manish, do you sell the same products through your through a website also? I mean, do you have any other than the marketplaces? Do you sell them through your website? No, we are going to start very soon. I think by end of this month we should have the website ready, because we have the supply chain ready. We have the warehouse ready. We have the 3PL ready. Everything is ready. So we thought, why not do through our own website also? Yeah, no, the reason why I was asking this was like, say for example, for me, my website and my marketplaces. I mean, when I am advertising on social media or when I am advertising on Google, I am directing traffic to my website, because I want people to buy off my website. I want the information. Absolutely. Then I don't all that stuff. I mean, very rarely, or I think I got there are very, very few times wherein I've done ads on social media or Google, and I've directed traffic to any of the marketplaces, because so that's why I was asking, because you said that you drive traffic from social media to Amazon. I mean, so Bindu, difference between you and me very clearly is that you are the brand owner and I'm not. I'm a trader. So once I start becoming a brand owner by introducing few brands or in few categories from my side, I will also be doing exactly the same thing as you are doing. Okay, fair enough. So basically what you're saying is, if I am selling through my website, then this is not a, I mean, you wouldn't recommend it. Like basically, yes. It makes sense for me to advertise within the Amazon space for targeting the Amazon consumers. So right? Just to keep it in public, I would also be, kind of once I start on my own website, it will be affiliate come e-commerce website. So whatever kind of spends that I have done, I would have, done a spending of 1 CR plus, including the Flipkart also over the last 4 years. So that, that kind of a spend would gradually go into my website only, gradually, so that, at least in 3 to 4 years, whatever spends that I make on my website, I am able to kind of reimburse that spend through the affiliate commissions that I generate. So that this model kind of becomes, independent or self-sufficient model. Are you getting what I said? Yeah. Okay, great. ठीक है, तो visibility के बाद हम आते हैं velocity पे. तो we become very crazy for the reviews. So there are things that people do for reviews. We also do the same thing, but we don't do anything under the belt. It has to be very, very clean and very, very clear. So of course we rejig the campaigns a lot for optimization, and most important thing, because both the marketplaces have become very aggressive, that we'll show your listing only if it is present locally.
So the cluster-based approach you have to do, like I think Amazon has 11 clusters or Flipkart has some 6 or 7. So you have to be there present in most of the clusters, as you possibly can. So like we are present, in 4 clusters, both in Flipkart and both in Amazon. So that also helps. You will see that, you will see a jump of about 10 to 12% of your sales as and when you keep on opening a new cluster or a new location. सर आपका तो वॉल्यूम काफी ज्यादा है तब 4 क्लस्टर से फॉर समबडी who's starting on Amazon what would be the optimum cluster suggestion that you would have? सर 3 तो चाहिए Amazon को और Flipkart को भी, तो आप ATS के थ्रू या जो Flipkart का जो खुद का ट्रांसपोर्ट है उसके थ्रू आप यूज कर सकते हैं, भेज सकते हैं. Then there are transport providers that will take part load also from you, so that should not be a worry. By putting it on FBA you mean? By putting on FBA you can do that. So you can you can put on FBA in that particular location, and you can have a MFN or a seller flex. Seller flex I'll recommend for the location that you are managing yourself. Understand. Thank you. Okay. Manish, can I ask a question on reviews here? Yeah. Because I mean, all of us struggle. I mean, this is a portion that is like kind of gray area for everyone, Tell me, I mean, on Amazon, clearly, generating volume reviews is a challenge. But tell me, this is with respect to Flipkart, how, like, and on Amazon is very clear that reviews really matter. But tell me how does this same, how is the whole reviews thing on Flipkart? How important is it? And does it make a huge difference? Reviews are important for Flipkart also. So they consider a product decent if it is reviewed 3.5 and above. But the speed of Flipkart is so high in terms of reviews compared to Amazon. So whenever you are launching a product, if I just talk about the launch of the product, I would rather make a lot of effort about building the reviews on Amazon and in a good way and a sizable number as fast as I can than on the Flipkart. Okay. And what is a sizable number as per you? See, what happens is sizable number is that number that the competition cannot buy your product in a number more than that and disrupt your product rating. Okay, that's a good benchmark. Fine. Yeah, okay. So a safe number would be, like, broadly speaking, at least about 200 reviews would keep you safe without messing up your rating. I think 20-30 will also keep you safe. Maybe in the beginning, but in the long run, like, suppose, slowly. See, long run, what happens, Bindu, is that your product, will be doing the talking. मतलब I am just, जो मैं reviews की बात कर रहा हूँ शुरू में, वो सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं sabotage ना हो जाऊँ शुरू के reviews. Yeah, got it. So you're saying a new brand, you can like get about 30 reviews, decent reviews there going. That should like keep you safe for a while. Yeah, and then as the brand grows, it gets added on. Okay. Yeah, because what happens is कि once people start seeing those reviews ना, आप देखते होंगे वहाँ पे upvote आता रहता है. तो वो जो upvote आता रहेगा ना, वही सबसे ऊपर दिखता रहेगा. So for 2 years, there was one bad review which was upvoted for one of our products. Such a bad way, हमने पूरा जतन कर लिया, पूरा ट्राई कर लिया कि भैया आप कौन हो, हम आपका रिप्लेस कर देंगे. एंड वी वर नॉट एबल टू फाइंड आउट एनी विच वेज, कोई नेम नहीं, पता नहीं कहाँ से वो रिव्यू आया, 2 साल तक अटका रहा. एंड दैट इज स्टिल द स्लोएस्ट एसक्यू दैट वी हैव. इट रियली हैम्पर्स अ लॉट. कई बार तो प्रोडक्ट किल कर देता है वो. Okay, so I'm moving ahead. So campaigns I have already discussed. So now I'll come to the the operations part in the advanced thing. So this is what the order and the payment flow that we are very, very diligently following, observing very, very minutely. We use Excel, we use Power BI, and we have also built, as I was telling you, something called eCommerce that we are using as of now internally for our things only, to manage the tax thing and the payment thing, and उससे हम अपना P&L भी निकाल लेते हैं SKU wise. So whatever is getting inverted, चाहे वो आपके warehouse में invert हो रहा हो, चाहे वो FBA या Amazon के या Flipkart के warehouse में invert हो रहा हो,
सबसे पहले हम ट्रैक करते हैं, वी ओनली मैनेज एक्सेप्शंस, कि क्या मैंने जब सपोज मेरे पास 1000 यूनिट्स का इन्वर्टिंग मैंने किया, तो क्या वो 1000 यूनिट्स जो है इन्वर्ट हो गई? अगर नहीं हुई तो वी मैनेज दी एक्सेप्शंस। सो वी रेज अ क्लेम कि भाई आपने 1000 का हमारे को पीओडी दिया, आपने 2 जो है इन्वर्ट कम करी है, तो आप उसका क्लेम दीजिए हमारे को। सो ऑल दिस इज एक्सेप्शन मैनेजमेंट। Then suppose say 1000 units are inverted, then the order is received, say maybe say 100 orders are received. Before they are shipped, say suppose out of those 100, 5 orders are cancelled. Okay, but system में order ID generate हो जाता है, but वो cancel भी दिखाएगा उसका status, so we take care of that. फिर वो ship होता है, 95 are supposed to be shipped. जो कस्टमर तक पहुंच गए, कस्टमर ने कोई रिटर्न नहीं किया, उसकी पेमेंट आनी चाहिए। पेमेंट कितनी आनी चाहिए, वो पेमेंट हम ट्रैक करते हैं कि वो सही आई या नहीं आई। उसके अंदर बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सेटलमेंट वैल्यू का कंसेप्ट है, एक्सपेंसेस कितने लग रहे हैं उसका कंसेप्ट है। वी हैव मेड क्लेम्स टू Amazon, फ्लिपकार्ट एज लो एज 11 रुपीज पर यूनिट, कि आपने हमसे ये ज्यादा पैसा ले रखा है, एंड वी हैव गॉट देम बैक ऑल्सो। ओके, सो वॉट एवर हैज बीन शिप्ड एंड कस्टमर हैज रिटेन्ड, उसकी आपको पेमेंट मिल जाएगी। वॉट एवर हैज बीन शिप्ड वो 2 तरीके से रिटर्न होता है, या तो वो आरटीओ हो गया या आरबीपी हो गया। एज एन आरटीओ मतलब कस्टमर मिला ही नहीं, या कस्टमर ने रास्ते में ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया, या कस्टमर ने लेने से मना कर दिया। एक रिटर्न होता है जो कस्टमर ने खोला और विद इन 7 days या 10 days की गारंटी में वो वापस रिटर्न कर दिया। तो these returns they get marked in the system as and when they happen, so we track them कि वो कब रिटर्न सिस्टम में मार्क हुआ और हमारे को फिजिकल यूनिट कब मिली। अब वो जब फिजिकल यूनिट हमारे को मिलती है, या तो वो सेलेबल होती है या अनसेलेबल होती है। अगर वो सेलेबल होती है तो वो इन्वेंट्री, ऑफ कोर्स इन्वेंट्री में चढ़ जाती है, और अगर वो अनसेलेबल होती है तो हम उसका फोटो वोटो खींच के, या अमेजोन खुद से देता है, फ्लिपकार्ट में हमारे को फोटो वीडियो बनाकर हमारे को क्लेम के लिए डालना पड़ता है। देन वी फॉलो फॉर द क्लेम कि वो क्लेम हमारे को मिला या नहीं मिला, और क्लेम अगर मिला तो कितना मिला। मतलब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि डिफरेंट टाइप ऑफ रिटर्न्स होते हैं जो अनसेलेबल बनते हैं, जिसमें बॉक्स डैमेज है, या प्रोडक्ट डैमेज है, या रॉन्ग प्रोडक्ट है, या एसेसरी मिसिंग है। वी क्लेम, वी मेक द क्लेम एंड वी ट्रैक देम टिल द लास्ट माइल। जैसे हमारे को पता है कि भाई बॉक्स डैमेज में मेरे को 12% क्लेम मिल जाता है, प्रोडक्ट डैमेज में जो होता है मेरे को 27% तक का क्लेम मिल जाता है, रॉन्ग प्रोडक्ट में मेरे को करीब 112% का क्लेम मिल जाता है। तो those kind of numbers we are tracking very very finely, very very minutely, and the team is very much aligned, systems are very much aligned कि data कहाँ से आना है और क्या करना है हमारे को, and this is what is saving us. This is actually the money earned more, because very very small margins जब आपको बचाने होते हैं तो ये सारी चीजें जो है काम में आ जाती हैं। सर ये सारी ट्रैकिंग आप सेलर सेंट्रल के थ्रू करते हो या कोई और सॉफ्टवेयर? I'll showcase something, I'll scare you and I'll show you something, sir. So the relevant reports to handle this flow and manage exceptions in Amazon are these 6 reports: the inventory event report, customer shipment report, customer returns, payment report, order level reimbursement, and removal order and shipment reports. तो ये 6 रिपोर्ट अगर आप देखेंगे, एंड इसके अंदर if you have the relevant these reports, we looking up into each other, हमने तो मतलब ये इतनी ज्यादा इंटरट्वाइंड थी ये रिपोर्ट्स हमने पावर बीआई पे डाली थी। तो वो पावर बीआई से हमारे को काफी अच्छा डेटा मिलने लग गया था, और हम अभी भी उसको यूज कर रहे हैं। बट दीज आर द 6 रिपोर्ट्स दैट वी यूज टू ट्रैक द मूवमेंट ऑफ इन्वेंट्री फ्रॉम इनवर्टिंग टिल द टाइम we remove it and get it back in our warehouse. So these are the 6 very important reports: inventory event, customer shipment, customer returns, payment report, order level reimbursement, removal order, and shipment report. Okay. फ्लिपकार्ट में ये जो रिपोर्ट्स हैं, ये डेली हैंडओवर एक शीट है, वो आती है। डेली हैंडओवर शीट जो है इज काइंड ऑफ अ वेरी मैनुअल फॉर्म ऑफ अ डेली ऑर्डर रिपोर्ट। फ्लिपकार्ट सिस्टम बहुत थके हुए सिस्टम है उनके, तो उनकी एक डेली ऑर्डर रिपोर्ट आती है या ऑर्डर शीट आती है, वो काफी दिन तक आई नहीं। तो देन एज अ सरोगेट वी स्टार्टेड यूजिंग द डेली हैंडओवर शीट। डेली हैंडओवर शीट बहुत अच्छा शीट डाउनलोड होता है just when we process the orders, make them ready to dispatch, and before the courier person scans them for pickup. उसके बीच में हमारे को ये रिपोर्ट निकालनी पड़ती है। अगर हम उसके बीच में रिपोर्ट ना निकालें तो वो पूरा डेटा गायब हो जाता है सिस्टम में से। तो दिस इज अ वेरी मेहनती रिपोर्ट दैट वी डू, बट वी डू इट। देन ऑफ कोर्स देयर इज अ पेमेंट शीट। पेमेंट शीट फ्लिपकार्ट की इज मच बेटर लुकिंग देन Amazon,
Then there is a completed return sheet, and then there is an in-transit return sheet. These 3 and 4 in Flipkart are very important. Why they are important is because you have to make manual claims to them. Amazon फिर भी कई बार आपको जो है चीजों पे कि भाई इन्वेंट्री लॉस्ट हो गई, उसने आपको क्लेम दे दिया. इनके केस में अगर इन्होंने ये लिखा है कि भाई हमने ये रिटर्न कंप्लीट कर दिया है, तो अभी मैं बताता हूँ क्या हुआ. ये 28 फरवरी को हमारे साथ व्हाट हैपेंड इज, डिलीवरी, मुझे नहीं पता कहाँ से डिलीवरी ने 33 पैकेट्स हमारे स्कैन कर दिए, कहाँ बैठ के किए मुझे नहीं पता, और कह दिया कि ये रिटर्न कंप्लीट हो गए हैं. वो मेरे वेयरहाउस में पहुंचे ही नहीं रिटर्न को. 1 मार्च को हम लोगों ने उसके क्लेम रेज कर दिए थे, बिकॉज वी डू इट डेली बेसिस पे कि भाई हम अगले दिन रिपोर्ट निकालते हैं पिछले दिन की कि इसमें तो लिखा है 33 आए हैं, बट मेरे पास तो आए नहीं. तो मैंने कहा भाई आप पीओडी दो मेरे को. And because they were not able to give the POD of the last day, so they had to, kind of make the claims to me. एक इन ट्रांजिट होता है कि मतलब कस्टमर ने रिटर्न तो कर दिया है, पर वो सिस्टम में घूम रहा है कहीं, या तो कस्टमर के यहाँ से कोई लेने नहीं गया, या हब में नहीं पहुंचा, या मेरे को जो लोकल हब सर्व करता है उसमें नहीं पहुंचा, उस हब वाले ने मेरे को नहीं दिया, तो वो सारा इन ट्रांजिट में दिखता है. इफ इन ट्रांजिट में आई थिंक टिल अबाउट 60 डेज तक अगर नहीं आता हमारे को, तो हमारे को वो क्लेम रेज करना पड़ता है. तो वी ट्रैक इट अगेन एवरी डे. And then of course if you are managing the things through fulfilled by Flipkart through their warehouses, उनकी भी 4 रिपोर्ट्स आती हैं जो लगभग Amazon से मिलती हैं, तो इन्वेंट्री के हिसाब से. तो अगर आप इनको पेमेंट के साथ रिकंसाइल करके देखेंगे, तो you can get a lot of valuable information in that. Okay. So I'm going to show you certain things that we do. So this is the Power BI. As you can see that, from where all the warehouses that we send, the West Bengal, the Karnataka, Maharashtra, Delhi, and where all we sell. तो ये SKU wise भी हमारे पास आ जाता है कि महाराष्ट्र में ज़्यादा बिक रहा है, यूपी में ज़्यादा बिक रहा है, तो SKU wise SKU लेवल तक हम जो है उसके हिसाब से अपनी गाड़ी बनाकर हम भेज देते हैं कि भाई वेस्ट बंगाल में ये गाड़ी जाएगी, तो उसका जो मिक्स है वो ये होना चाहिए. बैंगलोर जा रही है तो उसका मिक्स ये होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये ज़्यादा बिकता है. तो दिस इज द काइंड ऑफ intelligence that we have using the Power BI. Then of course this is our dashboard, eCommerce का. मैं आपको पहले product profitability report दिखाता हूँ. This is a product profitability report. So I have done for one SKU which is this 3B black जो आपको दिख रहा है. इसके orders में अगर जैसे देख रहे हैं, तो I have just put the payment report of my Amazon panel into this eCommerce that we are using. This is a homegrown portal. उसके अंदर ये सारा दिखा देता है कि प्रिंसिपल कितना आया है इसका, पिक एंड पैक फी कितना लगा, शिपिंग डिस्काउंट कितना लगा, फिक्स क्लोजिंग फी कितना लगा, कमीशन कितना लगा, वेट हैंडलिंग कितना लगा, और कितना क्वांटिटी के हिसाब से. दिस इज द काइंड ऑफ यूनिट रियलाइजेशन दैट वी हैव गॉट पर यूनिट. तो एग्जैक्टली अगर इसमें से आप वो माइनस कर लेंगे आपका परचेज कॉस्ट, तो यू विल गेट टू नो कि पर यूनिट आपको कितना आ रहा है इसके अंदर. Then in the same product profitability report तो है ही हमारे पास, we have the order wise payment report also. So like as you can see, if I just have to see कि एक particular payment report में इस वाले SKU पे orders के हिसाब से मेरे को जैसे pick and pack fee कितना लगा, इतना ही लगा जितना लगना चाहिए, weight handling कितना लगा, उतना ही लगा जितना लगना चाहिए, fixed closing fee कितना लगा. So all those things I can check and I can manage the exceptions कि भाई इतने, I can download the report, जो मेरा लगना चाहिए उसको मैं हटा देता हूँ, एक्सेप्शंस को मैं क्लेम बना के डाल देता हूँ. ओके, दिस अगेन इज द पावर बीआई. ये आप अगर देखेंगे तो इसके अंदर इफ यू विल सी, आई हैव द जीएसटी डेटा, आई हैव द कस्टमर शिपमेंट डेटा, स्टॉक डेज हमारा बनता है कि हमारे पास कितना स्टॉक कौन सी लोकेशन में कितने दिन का पड़ा है, उसके हिसाब से हम व्हीकल बनाते हैं. देन ऑफ कोर्स द बिजनेस रिपोर्ट्स दैट यू गाइस सी कि कितना पेज व्यूज आया, कितना कन्वर्जन हुआ, कितना क्लिक हुआ, इवेंट डिटेल कंपेयर टू दी FBA शिपमेंट जो हमने भेजा, इवेंट डिटेल कंपेयर टू दी customer returns. So all those things we have put it in Power BI for Amazon. Flipkart we have mostly put in our own Excel or the eCommerce dashboard that we are doing. So again these are the kind of some reports the inventory की जो हम देख लेते हैं, compare कर लेते हैं. So now coming to the the account health, it has become a little less challenging for us now because the speed is decent. Because the speed is decent, तो हमारा denominator थोड़ा high रहता है. Yeah.
Yeah, I am not able to hear you clearly. Am I clear? Am I audible? Yes, you are. Okay. चिराग जी, मैं आपको नहीं Yeah. सुन पा रहा हूँ. Oh, okay. So मैं फिर से ट्राई कर रहा हूँ. हाँ. The question that I have is, जब आपने reconciliation की बात करी, जी. मेरे सेल्स बहुत कम होते हैं, महीने करीबन 4-5 लाख के ही होते हैं. हाँ. तो मैं इतना रिकंसाइल नहीं करता, अज्यूमिंग कि Amazon तो ठीक ही करता होगा. जस्ट एक क्वेश्चन, क्योंकि FBA है सारा. हाँ. तो मेरा एक क्वेश्चन था कि ये रिकंसिलिएशन करने के बाद इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना गड़बड़ निकलती है, अगर निकलती है तो. इफ इट्स 1 or 2% तो मैं चालू रख रहा हूँ. इफ इट्स अ मेजर ब्लंडर तो फिर मेरे को भी करना पड़ेगा. सर मैं आपको ना एक चीज बताता हूँ. Amazon आई हैव चेक्ड आउट मेनी टाइम्स. Amazon इज मोटा मोटा ओके. ठीक है. आप रोज ना अपनी पेमेंट रिपोर्ट चेक कर लिया करो. ठीक है. ओके. जो पेमेंट रिपोर्ट आता है ना, ट्रांजैक्शन व्यू, उसको चेक कर लिया करो. इफ इट इज फाइन, यू आर मोर और लेस सॉर्टेड. Got it. ठीक है. Thanks. ठीक है. Perfect. मतलब इन वन ऑफ द ट्रांचेस, just mark my words, in one of the tranches I made Amazon pay me 6.7 lakh rupees including tax as a claim, as a reimbursement, after fighting a lot, in one of the tranches. Okay. So can you elaborate? Yeah. So what had happened was that for one of my ये कोविड का टाइम चल रहा था, और कोविड के टाइम में क्या हुआ कि बहुत सारी टीम वर्क फ्रॉम होम थी, काफी चीजें हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे थे या कुछ हो रहा था. एक मेरा प्रोडक्ट था जो जिसपे 7.5% कमीशन लगनी चाहिए थी, और उस पर 3-3.5 महीने तक गार्डन इक्विपमेंट के अंदर 10% वाली कमीशन लगती रही. एंड एवरीबडी जस्ट काइंड ऑफ फेल्ड टू टेक नोटिस. दैट वाज वन. बहुत महीनों तक मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स पे 1 या 2 किलो की ओवर चार्जिंग होती रही. एंड आई केप्ट ऑन राइटिंग टू देम एवरी 2 वीक्स कि मेरा ये इतने का क्लेम हो गया, इतने का क्लेम हो गया, इतने का क्लेम हो गया. मतलब इट वाज एज स्मॉल एज 11 रुपीज से लेकर एज बिग एज समटाइम्स 50 और 60 रुपीज ऑल्सो. तो वो सारा क्यूमुलेट होके जो है ना, बहुत बड़ी अमाउंट बन गया था. और जब उन्होंने दिया तो मुझे 2 लाख रुपए फालतू ही दिया, बिकॉज जब उनका सिस्टम चला तो दे इवन पिक्ड अप थिंग्स दैट आई हैड मिस्ड टू सी. So if you are very closely watching your payment report, transaction view में आपके जितने SKUs हैं, आप randomly उसको watch कर लो कि भाई मेरे को कितना पैसा लगा उसके अंदर, कितनी शिपिंग लगी मेरी, कितना कमीशन लगा, कितना फिक्स लोडिंग फी लगा, कितना एक और चार्ज लगता है, FBA पिक एंड पैक लगा. अगर आप वो देखते रहोगे ना, यू आर सॉर्टेड. मोस्टली Amazon गलती नहीं करता. फ्लिपकार्ट बहुत गलतियां करता है. वी आर वेरी ऑफ फ्लिपकार्ट. बहुत गलतियां करता है फ्लिपकार्ट. Okay. Thanks. In this, you're saying about the weight of your product. Is this weight decided at the start of because it includes packaging also and your product also, and since product will probably remain consistent over a long period of time, the packaging should. So how do you decide upon the weight? So Abhishek, what happens is the weight is decided as per the packing of the main carton, right? So we know what the packing of the main carton is. LBH होता है, L into B into H divided by 5000 is the volumetric weight. उसके हिसाब से आपको वेट हैंडलिंग लगता है. ठीक है. बट जब वो किसी भी फुलफिलमेंट सेंटर में जाता है वो प्रोडक्ट, और वो कहीं से ना, जब वो पहली बार पास करता है या दूसरी बार पास करता है, या हो सकता है 100 टाइम में जब पास करा, कई बार वहां पे वेट गड़बड़ हो जाता है क्योंकि वो डायमेंशन गलत कैलकुलेट कर लेता है. तो जैसे जब हमने पंखे लॉन्च करे, वो जो 6 किलो में जाना चाहिए था वो 12 किलो में जा रहा था. जो 6 किलो में जाना चाहिए था वो 15 किलो में जा रहा था. जो 6 किलो में जाना चाहिए था वो 5 किलो में जा रहा था. So out of the 10 I think that we launched, out of 10 only 4 were correct, 6 were wrong. It took us 20 days to fight with them to get those corrected, and it was a lot of fight with them to get those corrected. हो सकता है ये 5 महीने बाद ऑटोमेटिकली फिर से चेंज कर दे कुछ. So you have to be very minutely monitor these things. आप दिन में एक अपना वो बना लीजिए कि भाई मेरे को पेमेंट रिपोर्ट मेरे को दिन में एक बार देखनी है, और मैं कम से कम अलग अलग SKUs जितने देख सकता हूँ मैं देख लूंगा. If that is all right, you are sorted. Right. इन्वेंट्री वगैरह आई हैव चेक्ड आउट. वो बेचारे अपना अच्छे से क्लेम दे देते हैं आपको टाइमली. उसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है Amazon के साथ. Are there these Amazon warehouses managed by third parties? I haven't heard of it. Flipkart does, and this is where the problem arises. We have had this experience here in Assam.
Amazon warehouses are managed here by or was managed. We stopped using that service. It was being managed by a third party, and because the third party was doing it, Amazon washed its hands off. They did not get involved into our claims. And the third party, being a local person, he was absolutely not interested in giving any kind of response or service or listening to the complaint. So is what there happens? anything that can be done in such a No, scenario Abhishek, where the point is with Amazon, na, if you don't raise anything within 30 days, they will wash hands off. With Flipkart also it happens. Luckily, we had all the claims made in time, so we are still following with Flipkart. We face the same problem as you are facing, but with Flipkart, we are fighting for 450 items of lost inventory, and we are still fighting. That's roughly around 9-10 lakh rupees of material that we are fighting for. And we have everything. So We have tickets. Huge. Yeah, it's huge. Yeah. So we are fighting. We have all the ticket numbers. We have when they were raised. In how much time they should have been raised. Were they raised in time and now? All check boxes are ticked, and we are still fighting for last. I think since October and November we are fighting. And then they also claim for unfair amount of duration which has stayed in the warehouse, some rents and charges and everything. Yeah, which is fine, but so you should be careful about that because they already defined ki wo storage fees or long-term storage fees lagegi aapko. And of course, Amazon is no, they are wrong in. They are wrong in what they are charging. That's what these are other mistakes they keep making. So if you do your weight right. So the same weight will also end up in your storage fees. The same weight will also end up in your weight handling fees. For the month of February, we were charged twice the amount of storage fees. We were the first one as sellers to raise it to our account manager within half an hour of it hitting our account. Within half an hour, we had raised a ticket to them with the Excel and also highlighting the areas where we proved to them it was doubly charged. So the account manager had no clue by that time. It was only after 2-3 days. She said, yes, the other sellers also face the issue and this will, the reversal will happen in about 7-10 days time from now. So that was a huge amount, around, I think, 2.5 lakh rupees of storage fees has been charged extra to us. So operationally, basically the moral is that operationally it has to be a huge monitoring exercise and constant monitoring exercise. Yeah, so but if you know which all parameters, so I'll come to that also. So account health में मैं ज़्यादा नहीं घुस रहा हूँ because mostly it is sorted for us and I would say कि आप account health में जाके ये चीज़ sort करें खुद के लिए भी और Flipkart में ये चीज़ें देखें कि product rating आपकी कहाँ चल रही है. So we'll become platinum. We are platinum, but trending tier हमारा gold है, but we are striving again to get 3 more points here so that we become platinum again. So we'll do it. We still have about 2.5 months to go here. So this is the work division. Like people were a little surprised as to how we did things at such a lean workforce. So I made my team members write exactly what they do. So like if you'll see that daily the work which is happening, you can see order processing. The warehouse guy is doing payments check every day. The data guy is doing. He's doing it on, see the importance of payments checking daily, weekly, monthly. Every time we are just doing it. Listings check daily is happening. Returns reconciliation, inventory tallying, and stock days in hand. The warehouse person is doing it daily. मतलब हमारे को ये पता है कि हमारे कौन से warehouse में माल कितने दिन का कौन सा SKU पड़ा है. So this every day, मतलब and there are reports, that have been given to him. And the tools that have been given to him कि आप ये रिपोर्ट निकालकर इस टूल में डालेंगे चाहे वो पावर BI है या एक्सेल है या वो हमारा eCommerce हमारा खुद का सिस्टम है तो आपको ये चीज निकल जाएगी. Then of course we raise the unsellable claims daily basis, lost inventory claims daily basis, campaign optimization अलग-अलग campaigns की data वाला बंदा जो है daily, weekly और monthly देखता है. क्रिटिकल टिकट रेज एंड फॉलो अप. क्रिटिकल टिकट जैसे स्टोरेज फीस 2.5 लाख रुपए लग गई तो हम उसको बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं टिल वी क्लोज इट. देन जो वेयर हाउस एंड ऑल अदर बिजनेस एक्सपेंस कैलकुलेशन है वो डेली बेसिस पे अकाउंट्स वाला करता है. देन ऑफ कोर्स देयर आर मोर आइटम्स व्हिच आर ऑन द वीकली बेसिस which is like the payment check as I told you, listing optimization, lost inventory claims, data वाला बंदा उसको रीचेक करता है रिपोर्ट्स निकाल के कि वेयरहाउस वाले ने जो अपने लेवल पे देखा था वो सही है कि नहीं है. कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन हम यूजुअली वीकली बेसिस पे करते हैं.
cash flow check करता है accounts वाला on a weekly basis and a monthly basis because the accounting system of Flipkart and Amazon are not so good. So we have a very good control on the inventory and we do the cash flow method से हम लोग अपना देखते हैं कि भाई whether we are not missing anything or not. So all these things monthly अगर मैं आऊँ payments check है, returns का reconciliation है, inventory का tallying है क्योंकि हम midnight inventory लेते हैं every month end पे, inventory days and raise the PO अगर हमारे को ये उसका देखना हो. This should have been daily also. I think he missed to write it. We are checking every day कि हमारे पास कहाँ पे inventory days कितने हैं और हमारे को vendor को PO raise करना होता है. So these all things that we are doing. So this is a work division, and that is why we are able to do it in these 3.5 people, because accounts person is also taking care of the other group companies accounts also. But the main 3 people that I have is the warehouse guy, the data guy, and the listings girl. Okay. Any question? Because this was the last slide. This is exhaustive and amazing. Hi, Sorry? Manish, one thing. Yeah. Manish, the Amazon, the commission is based on the category we publish Yes. our item. Yeah. In my product, I have seen that the commission is different in same category only. Like we need to raise it, or You have to raise it immediately. जैसे मैंने बताया ना, मेरा गैस स्टोव था, मुझे कहीं पे भी नहीं दिख रहा था, मतलब सब जगह वो गैस स्टोव दिख रहा था, मतलब सब जगह पे सिर्फ कमीशन में वो 10% लग रहा था. तो मैंने पूछा भाई 10% क्यों लगा रहे हो इसका, तो बोले ये आपका जो है ना उसमें है गार्डन इक्विपमेंट में है. अच्छा. तो मैंने कहा पैसे वापस करो, कहते सिर्फ पिछले 30 दिन के देंगे, उससे पहले के 2.5 महीने के नहीं देंगे. तो मैंने कहा पहले 30 दिन के दो, 2.5 महीने के फिर बाद में फाइट करेंगे. तो दैट वाज अराउंड, आई थिंक अराउंड उसी का ही करीब 1.8-1.9 लाख रुपीस था जो हमने लिया था उससे, वो 2.5 महीने का उसका यार. फाइन. तो आप इमीडिएटली चेक करो उसको, कैटेगरी सेम है तो वो लगना चाहिए सेम. फाइन. थैंक्स. Okay, any other question? Manish, that was very good actually, very insightful. Thank you. This was eye opener. Thank you, Somsar. Manish, can you, can you, I was hoping that we get covered, but can you take a session for those of us who are interested on Amazon advertising? What are the various platforms? What works for, which of those various things works for what? Those, that kind of stuff. Basically focusing on the advertising on Amazon platform only. Can you do that, please? I can take that, but I'll first share with you the campaign optimization sheet that I have prepared. So that should help. And if it goes a little technical, you can tell me, then we can have that. That's a slide that you covered in the beginning, right? No. I'm going to give you the campaign optimization sheet. कि CTR इतना है, CPC अगर ज्यादा दिख रहा है और आपका जो है कन्वर्जन इतना आ रहा है, ACOS इतना आ रहा है, तो क्या करना है. So basically combinations पे खेलता है, but it is not exact science. It is somewhere a bit of art also. Yeah. So but still, I know, I'm also talking about whether I'm also talking about there are different forms of advertising that I can do, right? I can do a sponsored ad, I can do a that I can take. Yeah. So that's what I'm saying. Like so like say for example, for me, I've seen that the video ads deliver much better results. Okay, and things like that. So if you can since you do one is you obviously crack something there in order to have such high ROAS. So can you just take a session which talks about what are the different avenues? Yeah. And what works? What are the pluses of those different? So I can take that in April first week because March cool. ending के बाद ही ले लेते हैं इसको. Yeah. Please do that. But that would really help. Yeah. ठीक है. Manish ji, one more thing actually. Midway, you had spoken about variant-wise analysis of competition. Yeah. So if that is possible, if that doesn't take away much of your time right now, if you could spend 2 minutes on it. I'll do that, sir. Wait. So I'll just leave you with a breadcrumb. And it's very easy to do. Can you see my screen, right?
Yes. Okay. Say suppose I'll talk about the fans only. That's us. So okay, like let's see this. It has decent number of reviews also, around 3,700. And does it have variations? Yeah. So it has variation, as in it is a Hill Briz Deco 1 star. Then it has the colors. So Briz Deco में इसके पास एक ivory gold है और एक smoke brown है और एक white bronze है. तो 3 वेरिएशन तो यहाँ से आ रही है. और Hill Briz Deco में इसके पास एक ये व्हाइट ब्राउन्स है, एक स्मोक ब्राउन है. नहीं ये नहीं है, करंटली अनअवेलेबल है, हो सकता है पहले हो कभी. और ये भी करंटली अनअवेलेबल है. तो मेरे ख्याल में ना मोटा मोटा इसके पास 4 वेरिएशन है, बट इसने टोटल जो है 6 वेरिएशंस बना रखी है. ठीक है, इट्स वेरी सिंपल. यू सी 3,740 रेटिंग्स, राइट? डू यू सी दैट, सर? Yes. Hello? Yeah. Yes. Yeah. So I'll go to that. Okay. And I'll go to, see all the. Yeah, एक मिनट. Okay, so I click on any of these things here. Okay. Okay. So now what you see is all stars. Okay. For only this variation. तो आप ये देख रहे हो 3740 में से 1096 वेरिएशन 1096 रेटिंग्स इसकी हैं. ओके, सो विच मींस लगभग इसने ये वाला जो वेरिएशन है 28% बेचा है. Got it. ठीक है. You can send 500 rupees to my account. बस सर आप 5 लाख कम से कम चार्ज करना. अरे मैंने ना Amazon को बोला कि मेरे को 5 करोड़ का कंसल्टिंग फी दे दो, बहुत सारे पैसे बचाऊंगा तुम्हारे. माने नहीं वो. क्या लॉस. मनीष भाई मैं आपको इसके बाद कॉल ही करने वाला था कुछ डिस्कशन करने के लिए. Next claim. Manish will settle it against your next claim. Yes. Today you have literally got more fans. Good, great. But I want to sell those fans. Okay. So any other question, or shall we close the session? Manish, thank you so much. This is really great effort. Thank you. Really knowledgeable for us. Great learnings. It also helps me, to consolidate all the things ना, तो मेरे लिए भी थोड़ा structure हो जाता है. Helps me also. So next time so much, drinks Manish. on me. This was really helpful. Thanks a lot, Manish. Thank you very much. Yeah, Abhishek, आप कुछ कह रहे थे? मैं कह रहा था next time we meet, drinks on me. Sure. Where do we meet? Delhi or Guwahati? जहाँ मिलेंगे सर, जहाँ भी मिलेंगे. Done. ठीक है सर. Right. Okay. Bye. Most welcome if you come here. Yeah. Okay. Bye. Take care. Thanks, Manish. Bye. Yeah. Bye.